I am Rajiv Kumar Malhotra, working as a corporate chef with the India Habitat Center. I am working in this industry from last 38 years. Worked with so many hotels like Claridge's, Oberoi's, Nerula's, Nico Metropolitan, Grand Hyatt, Uppal Orchid, The Quality, and right now working with the India Habitat Center. Actually, when I joined this industry in 85, 86, that time people don't aware of this industry actually. So I joined this industry in that time when people don't know about this, and when I joined, I was equally surprised कि ये industry है क्या actually. जब आए अंदर देखा, we saw different things, so we start enjoying everything. We start enjoying our life, our style of cooking. चीज़ें देख देख के अलग अलग नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें पता लगी, तो उसके साथ साथ आपका जो है एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ती है. सो विद दैट एक्साइटमेंट आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड नाउ आई एम हियर. दैट टाइम people actually don't aware about this industry, as I already told. पर जब आहिस्ता आहिस्ता आप इंडस्ट्री में आए, उस टाइम पे you are very much new for this industry. I am a BCom graduate also, and my family even don't know what is this industry where I am going to join. बट जब मैंने उनको जाके बताया कि इस तरीके की इंडस्ट्री है, इट्स अ फूड इंडस्ट्री, बहुत स्कोप है, एंड नाउ यू कैन सी कि कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में, कितने लोग आ रहे हैं. और उस टाइम पे तो बड़े ही कम लोग होते थे. उस टाइम पे जो है बंगालीज, क्रिश्चियन बंगालीज वर इन दिस इंडस्ट्री हु वाज द मेन डोमिनेटिंग पीपल एक्चुअली. जो कॉन्टिनेंटल सेक्शन को चलाते ही वही लोग थे, और पंजाबी लोग तो होते ही नहीं थे इंडस्ट्री में उस टाइम पे. तो बट नाउ यू कैन सी द बूम ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज नाउ, you can see where it is right now. Yes, we make a mousse, which my participant also making a truffle mousse with different kinds of mushrooms and truffle oil. So that's there. People will judge, chefs will judge that dish also. One thing is very important. If you are joining this industry, you have to put a lot of hard work in this. So that's the main important key for the students, for the people who are joining to the industry. They have to have put their hard work. That's the thumb rule of the industry.